Hi guys, welcome to Talim House YouTube channel. Today we are going to discuss a topic which is very interesting and important for the research student. And the title of this topic is 20 essential things for smart research students. The idea of this topic that came into my mind when I was reading this article which was published in Nature back in November 2018, and it was written by a lady, Lucy Taylor, and she wrote in a beautiful way that 20 things which I wish I would have known when I started my PhD. Now, the points she has raised in this article, they are so important and so crucial that I thought that instead of communicating in my words, why don't I use his tone, his words, his points to the student so that student जो हैं वो इसको आसानी के साथ understand करें और उनको अमल करें. So we are thankful for Lucy Taylor for this writing this great article, and also the Nature publisher. We acknowledging that they have published this for the betterment of the student. Now, in 20 points में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नंबर 1 पॉइंट वो जो सबसे जो की फैक्टर है वो है कि हेल्दी वर्क एंड लाइफ बैलेंस. whenever you do any task in life, obviously, and research is actually a serious task, तो आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ जो है दे शुड नॉट बी compromise. there must be a balanced. एक को अगर आप फोकस करोगे दूसरा सफ़र करेगा. So that's the obviously that's the one of the thing which everybody knows, and it has been observed कि most of the students जब वो एडमिशन ले लेते हैं और फिर वो इसको टेक इजी करते हैं कि हाँ जी हम रिसर्च कर लेंगे हो जाएगा, because they start working, to start teaching and start doing other jobs, but at the end they they fed up and they leave the studies. So it's very important कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो फोकस जो है वो आप अपनी काम को भी करें और दूसरे काम को भी, लेकिन देयर मस्ट बी अ बैलेंस. Another point कि when you started your degree, so meet your supervisor when somebody department assign you supervisor, तो discuss with him कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या strong areas हैं, क्या weak areas हैं, और आप के फ्यूचर प्लान्स और वो सारी चीज़ें उससे डिस्कस करें. बिकॉज द मोर यू टॉक विद योर सुपरवाइज़र एंड देन ही विल नो मोर एंड मोर अबाउट यू, एंड देन ही इन अ बेटर पोजीशन कि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें और आपके लिए काम को और ज़्यादा आसान तरीके से प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करें. नंबर 3, जब ये सारा चीज़ हो रही है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक स्टूडेंट जब अपने बिगनिंग में करता है, एंड दैट इज़ इन्वेस्टमेंट of time in literature. This is again very key because you have to spend more time in searching books and the past literature and the current literature, उसको compile करना, उसको save करना, and this will pay you back when you going to write your thesis and the research papers later on. Number 4, because the research is all about managing and organizing things, managing or organization, everything, managing your resources, whatever the resources you have, lab resources, supporting resources. So that's another thing that you should be able to effectively organize your workplace and the other tasks. Number 5, you must not be empty mind. That means कि आपके पास गोल और प्लान सेटिंग्स होने चाहिए कि ज़िंदगी में आपने क्या करना है. एमएस अगर आपने ज्वाइन किया है, वाई, देयर मस्ट बी आंसर ऑफ वाई. आपके प्लान्स क्या हैं आफ्टर एमएस, व्हाट यू वांट टू डू, एंड इफ यू आर इन पीएचडी देन व्हाट्स योर प्लान. बिकॉज व्हेन यू सेट गोल्स एंड प्लान, then you obviously there's a driving force which compels you to do work more and more, and obviously to finish within the time.
सो विदाउट गोल एंड प्लान्स इट इज़ ट्रस्ट मी ये बिल्कुल ब्लाइंड है जो environment होता है, and students they take it easy and then they just keep on going and that's why in India पाकिस्तान में या especially पाकिस्तान में जो PhD students हैं they takes longer duration to finish 6, 7 and 8 years at the end even so much so कि supervisor university उनके लिए एक उनको बर्डन वो होने लगते हैं कि यार just you have to finish it and then leave now. Number 6, this is again very common ऑब्जर्वेशन और ये सबसे ज़्यादा मुझे भी चीज़ फेस होती है कि जब भी स्टूडेंट को कहा जाता है कि यू हैव डन एक्सपेरिमेंट यस इसको लिखें, सर मुझे याद है मैं लिख लूँगी एंड ट्रस्ट मी ये कभी लूँगा जो है वो कभी भी जो है ना वो नहीं हो ट्रांसलेट नहीं होता. सो दिस इज़ द बिगेस्ट लाइज बिकॉज जैसे जैसे आप टाइम आपका 1 दिन 2 दिन 5 दिन एंड वीक 2 वीक्स 3 वीक्स 2 मंथ्स ईयर्स ये एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो आपने किया है जितना भी एक्सपेरिमेंट तो आप भूल जाएंगे. मेमोरीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म रखना मुश्किल है. सो यू हैव टू कीप द record and everything in your lab book and simultaneously when you do this thing you start write up because you have already doing your literature to start the write up of your thesis preliminary and that's जो राइट अप है थीसिस को राइट करके शो करके अपने सुपरवाइज़र को बताएं सो डैट ही सीज़ कि हाँ जी अब आपका स्टेटस क्या है, आपको ज़्यादा इसमें कौन सा एरिया वीक है, जिसमें लिटरेचर वीक है तो आपको लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करना है, प्लान ऑफ वर्क पे है, वट एवर इट मे बी. नंबर 8, बिकॉज थीसिस इज लेंथी एंड बिगेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट सो उसको आप फॉर द सिंप्लिसिटी ब्रेक डाउन कर सकते हैं. जो इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं उसके 3 हिस्से बना सकते हैं, लिटरेचर के भी 2 हिस्से बना सकते हैं. एक पास्ट लिटरेचर है ईयर्स वाइज और एक आफ्टर लेट्स से जो आप मॉडर्न या लेटेस्ट लिटरेचर है अप टू 5 years. सो इस तरीके से जब आप बना के डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करें देन इनपुट ऑफ योर सुपरवाइज़र 9 पॉइंट्स कि उसको उनको सबमिट करें एंड ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू और ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट होगा जिसको आप फर्दर इम्प्रूव करके थीसिस की फॉर्म दे सकते हैं. नंबर 10, बी ऑनेस्ट विद योर सुपरवाइज़र. दिस इज़ जनरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कोई भी रिलेशनशिप में जब ऑनेस्टी आती है तो वो रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा और मजबूत और पायदार होता है. सो इफ़ you be are more honest in terms that you have to tell whatever the results you have got negative or positive of your research supervisor share करें वो so that gives you a more respect in his mind and his heart. Number 11 is again this is a common observation that people and the students especially they don't bother कि काम कर रहे हैं दिन को कर रहे हैं शाम को कर रहे हैं वीकेंड्स को कर रहे हैं बट दे डोंट राइट इट एंड सेकेंड अगर वो राइट करते भी हैं तो उसको प्रॉपरली सेव नहीं करते बिकॉज नाउ इट इज़ अ डिजिटल एरा सो वी हैव टू सेव इट समवेयर इन हार्ड ड्राइव जो भी और अगर सेव करते भी हैं तो एक जगह पे एक लैपटॉप के अंदर एंड सडनली नेक्स्ट डे या कुछ लैपटॉप को इशू हो गया विंडो आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ी देन एवरीथिंग इज़ गॉन. सो दिस इज़ अ बिगेस्ट mistake which leads to blunders and blunder obviously leads to failure. Number 12, when you are doing all these things, so socialization is important. Don't be the bookworm. Meet your seniors, lab fellows उनके साथ गप शप करें joy mode में और socialization important point है. 13, participate in seminars and groups meeting. Obviously it is a part of socialization. एंड 14 देन ऑब्वियसली जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको खुद फील होगा कि मैं अपना काम जो है वो पोस्टर की फॉर्म में टॉक के फॉर्म में प्रेजेंट करूँ शो दीज रिजल्ट्स इन मीटिंग्स एंड इन कॉन्फ्रेंसेस इन वर्कशॉप्स विद इन योर सिटी. और जब ये चीज़ें आप करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप एक पुश आएगा कि वाई डोंट गो फॉर राइट अ पेपर. सो पेपर राइट अप करें या करके उसको फॉर्म में आप सुपरवाइज़र को दें तो ऑब्वियसली दैट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट एंड सुपरवाइज़र विल बिकम अगेन हैप्पी कि यार दैट्स द स्टूडेंट आई वांट कि इसने इतना जल्दी काम कर लिया और राइट अप भी कर लिया एंड देन ही नीड्स टू वर्क ऑन इन दिस डायरेक्शन एज वेल.
So this is very, very interesting point, important point. Number 16, life outside lab, because your life obviously is not all about everything you are doing inside the lab, जो हमने डिस्कस किया है. तो लैब के बाहर जो है, जो भी आपकी वीकेंड्स की, जो भी आपकी फैमिलीज़ की, रिलेटिव्स की एक्टिविटीज़ हैं, उसको पार्टिसिपेट करें. 17, do not compare yourself with others. That's very again common, especially फीमेल स्टूडेंट इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट उनमें ये चीज़ होती है. So you are unique in a way that you are working in your own domain. Nobody other follow you, and you should not follow any other party. So that's the very important कि आपको अपना काम, क्योंकि आपका काम है, आप एक नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन दैट एरिया. सो दैट्स एक्चुअली द मोटिव. सो उसमें अपने आप को कंपेयर करना, दैट इनफैक्ट यू आर अनडूइंग even your capabilities. 18 point, and that's again because when you are doing these things, so most of the time 10 out of 8 या 7 टाइम you will fail, आपके रिजल्ट्स नहीं आएगा. So that doesn't mean कि आप चुप करके बैठ जाएं या रोना शुरू कर दें. Discuss with your supervisor and ask the help, and this happens with everyone. This is not alone you are कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है. So share your problem. The 19 point, because PhD or MS research is the duration is extended at least 1 year or 3 years. So it's not always कि A B C D E everything everybody knows. And जो भी आपको टास्क मिला में भी आप A से B में आ जाएं, और C में अगर आप एक स्टेज पे जाना चाहेंगे तो मे बी आप A से B में आपको ज़रा टाइम लगे और B से C में जल्दी आ जाएं. सो दैट्स द थिंग्स. इट मीन्स कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं दे सकता, फेल हो सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका काम जो है वो irrelevant है. All the negative things, all the failed things, they will be the part of the manuscript, and they are actually the findings, and very useful finding for the people who will later on follow your work. And the last point, enjoy and chill your work. Whatever you do, obviously you do in PhD, MS, जो भी आप कर रहे हो, तो उसको fully chill करें, enjoy करें. Don't be shy. Celebrate whatever you got, your success, अपने peers के साथ, fellows के साथ, और of course अपने juniors को उनको help out करें. Now out of these 20, which you think is the most important point for you? And for me it's in point 9, then point 11 and point 12. They are very, very crucial, because these points actually are lacking, generally speaking, in all students. So talk to us if you need any extra, and write to us. We will happy to help you.